from Symbiosis Law School, Pune, and this is my first year that's going on. And I've given PI interviews for a lot of colleges and interviews in general for a lot of different things. So it's fair to say that I have a good experience with interviews and personal interactions. And Symbiosis का जो इंटरव्यू होता है, it's not that hard, but it can be tricky to navigate through. So इसीलिए it's like a good thing to have a structure ready to know what you're getting into and to have like stuff in your pocket so that when you need to do stuff, you can pull those things out and you can ace the interview. The main thing that uh, in this session we'll be going through is the basics and the introduction part and how to make a good introduction because that's sort of a main thing that any interview requires. आपका एक basic introduction आपके पास होना चाहिए. You know what you have to say. कि more or less जो questions बनते हैं वो सीवी पे बनते हैं एंड आपके इंट्रोडक्शन पे बनते हैं बिकॉज आपका इंट्रोडक्शन सामने वाले को दिखाता है कि ओके दिस पर्सन कम्स फ्रॉम हियर ही हैज दिस इंटरेस्ट these interests and we can ask questions based on that. I hope I'm clear यहाँ तक. Anyone please respond. Yes. Okay. So moving on to the PPT. So first things first, इंटरव्यू जो होता है इट कैन लास्ट फ्रॉम 5 to 10 minutes to even 15 minutes. जैसे यहाँ पे लिखा है 10 to 12 minutes का एक एवरेज इंटरव्यू होता है एंड उसमें दे कैन आस्क यू एनीथिंग. So it's very important to have your legal knowledge ready, your critical thinking skills ready because they can ask you situation based questions as well, and they can ask you legal questions as well. They can ask you anything that you can think of. So it's a good thing to have everything in your pocket. But to start with, it's important to have a strong introduction. And when we say a strong introduction, what makes a strong introduction is कि you know what you want to say. It's not just कि hey, I'm this is my name, this is where I come from, these are my interests, and मैंने ये करा है, and these are my achievements. That's not a good introduction. What you can do is उसी basic information को जैसे who are you, your name, school, city, and all these information उसके अलावा your academic orientation या your favorite subject, what you enjoy doing, your skills that you've used in the past and developed and how that is related to the career you're choosing. And उसके अलावा your sport interests, your interests other than your academics, if you've done any debates, if you've done any played any national competitions, ये सब can be taken into a bunch and it can be made into a flow so that it sounds better. So how I used to introduce myself and I still do in interviews is, hey, my name is Gautam Maurya. Hello there, my name is Gautam Maurya, whatever. And I am from this city. I've done my schooling from this school and my interests are these and they relate to these. तो उसको एक फ्लो में रखना है आपको. And whenever you speak during an interview, make sure that you hold on to that flow. Because एक बार आप इंट्रोडक्शन में फ्लो पकड़ लेते हैं या एनी आंसर में फ्लो पकड़ लेते हैं तो it's a very good thing that you keep that flow. It shows confidence, it shows you know what you're doing, and it reflects a positive image to the interviewer. बिकॉज अगर आप अपना फ्लो खो देंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे तो वो बहुत जल्दी झलक जाएगा सामने वाले को कि ओके दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट दे डूइंग, दे जस्ट सेइंग स्टफ, वो रट्टा मार के आए हैं एंड दे जस्ट कॉपीड एवरीथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी और वो वही बता रहे हैं.
it is very easy to catch that in a interviewee, right? So as इसमें पीपीटी में लिखा है बेसिक जो बैकग्राउंड है नेम स्कूल सिटी एकेडमिक स्टेटस एंड उसके अलावा व्हाट आई यूज्ड टू डू इज take my interests. So for example, if my interests are debate, money, and you know, writing, research in general, so I take these interests and I hone and I like frame them in a way that it all points to one thing, which is law. तो मैंने डिबेट स्टार्ट की 7th ग्रेड से दैट लेड मी टू debating more and more and moneying more and more, which in turn made me realize that oh, I have an interest in research and writing, and which led me to choosing law as a career option, right? So you see the flow that this brings, right? यहाँ पे मैंने दिखाया कि ओके आई हैव बिन डिबेटिंग सिंस ग्रेड 7th एंड मनिंग सिंस ग्रेड 7th, तो वो एक चेकलिस्ट क्लियर ऑफ हो गई कि ओके दिस पर्सन हैज गुड पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज, और दे नो दैट आई हैव इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। वहां से मैंने उसको रिसर्च एंड राइटिंग पे कनेक्ट किया कि ओके आई लाइक रिसर्चिंग, आई लाइक राइटिंग अबाउट स्टफ, and वहाँ and those two things like past experience in debating and my interest for research and writing को मैंने law से relate कर दिया, because law as a career requires both. You need to research, you need to write, and you need to be able to speak properly in front of people, in front of a judge. तो मैंने इन दो चीजों को अपने लॉ करियर से ज्वाइन कर लिया, एंड दैट मेक्स अ ग्रेट फ्लो अपार्ट फ्रॉम माय बेसिक इंफॉर्मेशन। डू यू गेट माय पॉइंट? Yeah, ग्रेट। नाउ ये आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, मेक श्योर दैट यू कीप इट क्रिस्प, रियली क्रिस्प, क्योंकि द इंटरव्यू कैन लास्ट फ्रॉम 5 minutes to 10 minutes. You have no idea how much time the interview is going to be. So you have to make sure कि your introduction is crisp, but it's long enough to cover everything else. तो मैंने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दी, मैंने अपना लॉ का रीजन बताया कि ओके मेरे ये इंटरेस्ट है एंड दिस इज हाउ आई रिलेट टू लॉ एज अ करियर। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ब्रिंग आउट माय अदर इंटरेस्ट। So me, for example, I play badminton, I play cricket, and I write poetries or whatever. तो मैंने इन चीजों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट ऐसे किया कि hey, I play these games, and badminton has taught me individuality and the importance of mm, paying attention, and cricket has taught me teamwork, and writing really helps me bring out my creativity. तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें दे दी सामने वाले को जो मेरे पास है, विच आई नो दैट दे वांट। मुझे पता है कि सामने वाले इंटरव्यूई को ये चाहिए, एंड मैंने उसकी सारी चेकलिस्ट वो कर दी। they don't have a checklist like printed, but they do have a mental checklist ki, okay, what we are looking in a candidate. You have to remember that you have to present yourself, you have to sell yourself. Any interview that you give is about you selling yourself. Like this, it's a sales pitch. That's all an interview is. It's a sales pitch. You have to sell yourself to the other person. You have to show ki, okay, I am a good candidate. I am worthy of being there. I am good enough to be in this college. That's what you have to show. You get my point? yes. Okay, so what we're gonna do is we're gonna keep this session interactive. Please, everyone, please switch on your videos. Am I visible to you all? Everyone, please switch on your videos. Uh, Ma'am? I won't be able to switch on my video due to network limitations. Is that okay? Yeah, that's fine. If you can, please switch on your video.
That would be Thank you. great. ये ऑल ऑफ यू, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। सी, यदि इफ यू वन वे करके रखोगे, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ इवन स्विचिंग ऑन योर कैमरास, देन हाउ आर यू गोइंग टू फेस द ऑनलाइन इंटरव्यूज? Okay, राइट one गौतम? more thing. हाँ। Yes, ma'am. वहाँ पे you have to sit in a suit and tie before the camera, and you have to sit there for like 5 minutes before you go into the interview panel in front of the panel. तो आपको वैसे कैमरा स्विच ऑन करके बैठना पड़ेगा पूरा टाइम बिकॉज they'll tell you कि okay, you have to go in, you give the interview and you come back. It's very fast. It's like आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है. So you have to be ready. You have to prepare yourself mentally कि okay, I'm gonna go in now. So it's better that you keep your video on. वहां से प्रैक्टिस बनेगी. Do I know anyone? Harsh. Okay, I can see Harsh. I see Athar. Athar, please switch on your video. Harsh. भैया आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट उसके बाद मैं करता हूँ ऑन। Okay. Athar. Shreyansh. Okay, I can see Athar. That's good. See, it's important that you have the confidence to switch on your video because वहीं से आपका जो confidence झलकेगा इंटरव्यू में वहीं से आएगा वो. Alright, so I'm gonna ask everyone again to switch on their video and okay, that's great. Everyone switch on the video and I'm gonna continue then. Okay, great. Now, ये जो structure मैंने अभी बताया, it's very important that you have that structure, right? So I'm gonna show you something else. Uh, okay, so I have this CV with me, which they ask you to make, right? When you get selected for the PI, I hope everyone can see my screen. Okay. So this is the CV that they ask you to make and they give you the format and they ask you to submit this. It's very important that you have everything narrowed down. Ki, okay, what I want to tell them. Okay, wait. Is it pause? Have you shared the CV yet? No, I've not shared my CV yet, but ma'am, is my screen visible? Your PPT is visible, but not Oh, your CV. okay, wait. I have Gautam ka CV. If you want, I can share in the group itself. ठीक है मैम वो आप मैं अभी इसको यहीं शेयर कर देता हूँ फिर मैं हाँ फिर ठीक अपन है, बाहर मैं बाद में शेयर कर दूंगी। हाँ ओके ठीक है। ओके नाउ इज इट विजिबल यस। ओके Okay, so this is the CV that they ask you to make. This is applicable for both Noida and Pune. तो मैंने दो कॉलेजेस के लिए भरा था नोएडा एंड पुणे एंड आई गॉट इनटू बोथ नोएडा फर्स्ट लिस्ट एंड पुणे आई थिंक इट वाज सेकंड तो आई गॉट इनटू बोथ द कॉलेजेस विद दिस सीवी राइट and it is very important that you have everything narrowed down. So, for example, they ask you for a brief introduction in the interview and in the CV as well. तो ट्राई करना कि दोनों सेम ना हो क्योंकि वो समझ जाते हैं वो पढ़ते हैं आपका सीवी स्पेशली पुणे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं राइट तो दे आस्क यू फॉर योर करियर गोल्स कि ओके आपको करना क्या है एंड अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट देयर आर इन द सीवी दे हेल्प यू नैरो डाउन कि ओके मेरे को इंटरव्यू में क्या बोलना है तो अगर इफ आई वांट टू हैव जैसे मैंने लिखा है मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन द लॉ ऑफ करियर तो नाउ आई नो कि ओके आई वांट टू डू समथिंग इन रिसर्च आई वांट टू गेट एलएलएम और पीएचडी मुझे अपने आप में एक गोल क्लियर होगा कि ओके मेरे को ये करना है and I want to contribute to the profession and whatever I want to do ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा right then they ask you for your academic achievements and
make sure that you list the major and important ones down. तो जैसे I had this like list की okay मुझे ये डालना चाहिए, and then I consulted a lot of people. I consulted उन्नत भैया, I consulted प्रियंका मैम कि मैम what should I put. तो दोनों का यही कहना था कि जो important है, जो highlight हो सकता है, like which can stand you out in the bunch, वो डालना चाहिए. So उन्नत भैया ये स्पेशली कहते हैं कि हर चीज मत डालो. अगर हर चीज डालोगे तो क्रैम्प हो जाएगा पूरा. वो ऐसा लगेगा कि भेड़ चाल में सभी डाल दिया है, सभी लिख दिया है. जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुमको लगता है कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू शो टू द अदर पर्सन, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे दिखाना चाहिए, तो वो डालो वहां पे. राइट. एंड दिस इज हाउ द सीवी शुड बी फ्रेम्ड. ऐसे ही आपको वो करना है कि ओके मैंने ये किया है, आई हैव डन दीस, आई एम प्लानिंग टू डू दीस, एंड दिस इज द पास्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव had to show you कि okay I can learn a lot and I can do better and better if I get a chance to be in your college. This is the concept of the CV that they ask you to make. इसी रीजन से बनवाते हैं कि they want to see are you a good candidate, are you employable, है ना, and are you willing to learn. These are the three main things that they look for any in any candidate. And इस साल if I'm not wrong बीकॉम एलएलबी भी आया है. Yeah. तो हाँ, तो वहां पे यू हैव अ गुड स्कोप कि ओके यू हैव थ्री कोर्सेज. एंड किस किस ने तीनों भरे हैं, किस किस ने सिर्फ बीए बीबीए भरा है, I चैट में filled बताओ. for BA and BBA. बीए, ओके. एंड चैट में बता दो बीए बीबीए क्या किसने भरा है. ओके, आई एम अज्यूमिंग सबने बीए बीबीए ही भरा है. बीकॉम किसी ने भरा होगा, और इज देयर एनीवन हु हैज फिल्ड बीकॉम एज वेल. ओके. So you have to interact, right? This is not a class. This is a session between you and me. मैं ही बोलता रहूंगा तो बहुत अजीब लगेगा मुझे भी, आपको भी. So please interact. Okay. Other than that, moving on, the next important thing that they ask you, and this is asked in almost all the interviews that I've given and I've seen my friends give. और जितना मैंने सुना है कि okay, these are the main interview questions that they ask you. यही होता है कि why law, और if you're choosing BA, BBA, whatever, why BBA LLB, why BA LLB, why do you want to pursue this particular course? And it is very important that you know what is attracting you, right? तो मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने कहा आई स्टार्टेड डिबेटिंग व्हेन आई वाज इन 7th, और दैट लेड मी टू द अल्टीमेट action of choosing law as a career. So you have to have it narrowed down. For example, it can be any social interaction that you had. It can be any session that you saw. स्कूल में कोई जज आया था, कोई लॉयर आया था, or whatever like motivated you. If नहीं है तो it's better that you don't say कि नहीं मेरे घर वाले ने बोला लॉ कर लो तो लॉ कर ली, या मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं तो मैं लॉ कर रहा हूँ. ये कभी मत बोलना, ये कहीं भी नहीं बोलना. कि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि आई डिडंट डू एनीथिंग एल्स इन माय आई डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स इन माय 12th, एंड आई जस्ट थॉट कि लॉ या क्लैट और स्लैट वुड बी इजी, सो आई जस्ट गिव द एग्जाम एंड हियर आई एम. दैट्स द worst kind of answer anyone can give. Make sure you don't give that answer. And as I keep saying, have everything in a flow. हर आंसर आपका फ्लो में होना चाहिए. एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड लीड टू अ पॉइंट. ए टू बी कनेक्शन होना चाहिए. राइट. मैंने डिबेट स्टार्ट की, वहां से मुझे ये सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, एंड दैट्स व्हाट लेड मी टू लॉ. राइट. दैट्स हाउ यू हैव टू answer every question from point A to point B. If they're asking you a situational question, कि, what do you think about these situations that are happening? वहां पे भी always remember हर चीज का एक flow होता है.
If they're asking you to answer a problem related question, first define the problem, make sure, and it is very important to think of the solutions on your feet, right? आप किसी भी situation based question का solution पहले से सोच के नहीं जा सकते. It's very important that you think of the solutions on your feet. प्रॉब्लम को डिफाइन करो, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को बाइफरकेट करो कि ओके दीज आर द सॉल्यूशंस, आई गो थ्रू दीज सॉल्यूशंस वेरी क्विकली. सॉल्यूशंस को वो करो एंड देन लास्ट में ऐड any helping line that can sum up the problem statement and solutions and just can give a structure to that answer. So for example कोई situation question पूछ रहा है, मान लो जैसे the Trump situation is going on and the Venezuela situation is going on, and they ask you what is the role of UN and what is the role of international law, what can we as observers do. And so you have to define the problem. You have to give the solutions. Ki UN should take more steps. US should be asked to step down, and there should be sanctions. There should be some serious repercussions. With that said, this is the concluding line. With that said, I still believe that, as observers, our main job is to make sure that all the parties have been heard. What does the US want from Venezuela? Why is it doing these particular things? And we reach to a solution that is beneficial for the both parties. ऐसे you add the concluding line, so it gives a structure to your whole answer, right? Moving on. Uh, Okay. Also, जो आप आंसर दोगे why law, what motivated you, make sure it's not your superficial answer कि oh मैंने I saw a couple of people who were helpless and I wanted to help them. Everybody gives those answers. They know that these answers are fake, and for sure इफ 2000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें से 800 900 1000 बच्चे ये आंसर देंगे कि आई सॉ समवन इन नीड एंड आई वांटेड टू हेल्प एंड आई थॉट लॉ वुड बी अ गुड ऑप्शन टू हेल्प दोस पीपल. कोई नहीं करता है, उनको भी पता है कोई नहीं करता है. मोस्ट पीपल गो फॉर कॉर्पोरेट और लिटिगेशन इन सम सॉर्ट ऑफ वे वेयर दे वांट टू अर्न मनी, राइट? तो ये उनको भी पता है कि तुम ये जो आंसर दे रहे हो बहुत सुपरफिशियल है, बहुत फेक आंसर है. तो मेक श्योर यू अवॉइड दीज सॉर्ट ऑफ answers. Future aspiration, your direction should be clear what you want to do. If you want to be a corporate lawyer, be upfront. Tell them that, ma'am, I see law and I want to do corporate law. I'm interested in company law, corporate law, and I want to do that. But make sure you add this. But I do want to keep an open mind. I'm keen on exploring every aspect that law has to offer me, and I might change my mind and do what I want to pursue at that time. What did all three be? Yes, Mahi, please. Mahi, please ask your question. What if they say you're Uh, okay, this is a good question. They can ask you why you only opted for Pune and Noida. And it honestly depends on what you want to do. My answer to that would be, ma'am, I see that this is the career option that I want to choose. This is you can relate this question to the future aspiration wala answer कि ma'am मुझे litigation करना है, and that's why I opted for SLS Noida because it's in the proximity of Supreme Court, High Court of Delhi, and it has a lot of litigation opportunities for a young aspirant like me, and that's where I want to head, and that's what I want to explore. And Pune के लिए you can change the thing to corporate law या मुझे जो करना है, मुझे अगर if I want to work for a lot of big brands उनकी legal counsel में, and that's where you can frame the answer.
डोंट से कि मैम एसएलएस हैदराबाद अच्छा कैंपस नहीं है, या आई डोंट वांट टू गो टू हैदराबाद और नागपुर. डोंट से स्टफ लाइक दैट. I don't think so. They're gonna question you based on your opting of all three courses, because they don't generally mind that you opted for these courses. Uh, it would be a problem if you have only opted for one course out of the three. They don't generally ask you questions regarding ki, why have you opted for all three, why not just one. They point this out only when you've opted for one course. Any other questions? Okay, thank you. Okay, just go for it. Yes. So we'll continue, and future aspirations. Yes. तो उसके बाद like all these questions, they come into the हेड ऑफ एचआर क्वेश्चंस, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं वो टेस्ट करेंगे. यू वांट टू असेस द कैंडिडेट, कैसी पर्सनालिटी है, एबिलिटी टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. All these questions, the interview part, the the introduction part, all these things are a way of the college knowing you and seeing you. How can you present yourself in front of people, कैसे आप बात करते हो, what sort of things you bring to the table for them. like you know this is a, think of it like a sales pitch, like a transaction between both the parties. You get the college, they get the candidate, sort of thing. So वहां पे you have to make sure that you present yourself very neatly, very clearly. You show them the full picture. Don't hide stuff, right? Because they can't tell when you're hiding stuff. They when you're hiding stuff, your answers will have gaps. So they'll be able to catch those gaps. So make sure that you don't lie about anything in your answers. Don't be superficial in your answers. Don't be कि मैं दो चार कैची वर्ड्स डाल दूंगा, दो चार कैची सेंटेंसेस डाल दूंगा आंसर्स में, तो अच्छा आंसर लगेगा. दैट्स नॉट द वे टू गो. Right. Now, the next thing they focus on is legal knowledge and current affairs. Make sure that you know the basic concepts of legal knowledge. जैसे मुझे मेरे पुणे के इंटरव्यू में पूछा गया था मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के बीच में, and they asked me about some sort of, I think it was uh, contracts law. Yes, they asked me a couple of questions about contracts law जो बेसिक में पढ़ाते हैं, indemnity और contingent contracts जो क्लैट की प्रिपरेशन में आपको कराते हैं. So these basic questions, these basic knowledges, they help you get through these. One second, Shri. They help you in making sure that your legal knowledge is suffice enough that you can give them a good enough answer, because they're not looking for experts. They're looking for people who have basic knowledge, basic ability, and are willing to learn on those basic abilities. One thing that you have to make sure the is कि अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है, तो डोंट से कि मैम मैं कुछ भी आंसर बना के बोल दूंगा. जस्ट से कि ओके मैम, आई एम वेरी सॉरी बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस आंसर एट द मोमेंट, बट आई मेक श्योर टू अपडेट माई सेल्फ ऑन दिस. तो दिस गिव्स देम कि ओके, ही इज नॉट अवेयर, ही इज नॉट लाइंग अबाउट इट, ही इज ऑनेस्ट, एंड ही इज गोना अपडेट हिमसेल्फ. वो एक क्लैरिटी देता है. तो वो बेटर है उससे कि आप बोले कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं थोड़ा बहुत ही बता देता हूँ. थोड़ा बहुत पता रहेगा तो वो आपको वो कर देंगे कि साइडलाइन कर देंगे कि दिस ही इज जस्ट गिविंग ऑन टॉप वाला आंसर, स्किम करके बता रहा है बस. दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? ओके, वेट. Will you consider or ask out results of the they do, but they ask you. They don't ask you directly. They ask you कि oh, if you got an NLU or SLS Pune, what would you choose? And they did ask me ये लास्ट टू लास्ट ईयर के एसएलएस नागपुर के इंटरव्यू में मुझे पूछा था कि what if you got
So I told them I'm from Raipur and they knew HNLU है वहाँ पे. So they asked me कि what if you get HNLU or SLS Nagpur, what would you choose? So it's better to be upfront about it and present that answer in form of a pro and cons list कि मैम मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल सकती हैं और मैं कहाँ एक बेटर लाइक लॉ करियर वो कर सकता हूँ कहाँ अपना एक बेटर अपॉर्चुनिटीज करियर देख सकता हूँ. इट्स बेटर टू प्रेजेंट आइडिया इन अ प्रो एंड कॉन लिस्ट ताकि उनको भी समझ आए कि ओके हाँ ही इज जस्ट नॉट सिर्फ कॉलेज ऑप्टिंग के लिए कॉलेज नहीं कर रहा ही एक्चुअली वांट्स टू डू समथिंग विद हिज करियर. कैन वी ऐड सी स्टफ वी डोंट हैव. It's better if you have any photos of it. तो जो list of documents में which I'll present to you guys in a bit. List of documents में you can add those photos. Even if you don't have specific proof. तो जैसे मैंने दिखाया कि just a second. जैसे मैंने इसमें दिखाया. How do I escape? Wait. Yeah. तो CV में एक part होता है. Extra curricular activities तो वहां पे you can just mention कि okay I've also taught underprivileged kids in rural areas. वो छोटा सा लाइन दिखा के you can move on. उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. It's better that if you have the proof of the thing या फोटोज वगैरह भी होगी तो that would be enough. आप उसको अवार्ड्स या एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल सकते हो. इफ यू डोंट यू कांट डू एनीथिंग. उसको बस लिख सकते हो. That would be enough. Okay, this is a very good question. They will ask this कि what will what will you choose if you get an NLU and would you opt for NLU over SLS Pune? And they generally ask this because this is sort of a decider question for them. And एज आई सेड मेरे एसएलएस नागपुर पे इंटरव्यू में जैसे मुझे पूछा था वही उसका आंसर होगा कि मैम आई वांट टू परस्यू लॉ एज अ करियर एंड आई विल परस्यू इट फ्रॉम अ प्लेस वेयर इट गिव्स मी good opportunities. If that's SLS Pune, that then I'll be choosing SLS Pune over any NLU. And if I get a good opportunities to ace in an NLU, I would be choosing an NLU happily because I want to do good in this career. ऐसा आंसर मैं देता हूँ एंड दिस सॉर्ट ऑफ द आंसर वर्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन लाइक दिस क्योंकि यू नॉट लाइंग कि ओके मैम आई वुड चूज एसएलएस पुणे. दे नो कि इफ नालसार मिलेगा आपको और एसएलएस पुणे मिलेगा यू वुड डेफिनेटली गो फॉर नालसार. एंड इट ओनली मेक्स सेंस टू गो टू नालसार इन दिस सिचुएशन. उनको भी पता है ये चीज. तो आप झूठ बोल के कुछ कर नहीं लोगे वहां पे. लाइक यू कांट डू एनीथिंग. वो उल्टा आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा कि नहीं मैम मैं एसएलएस पुणे चूज करूंगा ओवर एसएलएस नागपुर नालसार. नो वन इन द राइट माइंड वुड डू दैट. तो it's better that you are upfront with them. It's better that you don't lie to them. I hope that answers your question. uh, just give me one. Okay. Okay, so other than legal questions, उसके अलावा current affairs are a big thing. आपको जीके पता होनी चाहिए. You should know what basic, like कौन कहाँ का सीएम है और what the basic news is about India, what the basic news is about the world. जैसे अभी current situation चल रही है यूएस वेनेजुएला की. एंड the Chinese thing is going on कि ओ वहाँ पे they're planning to attack on Taiwan because of the whole US Venezuela thing. And uh, Israel Palestine war is still going on. Yeah, people, the Charlie Kirk situation हुई, he got shot and stuff like this. So you should know what the current affair is in India and in the world as well, right? And moving to the third thing is opinion on social, legal, and political issues.
So they generally ask this based on your CV. If you're mentioned anything, any sort of like, okay, I've written these papers on this. If you've not, they do generally ask you about this through your previous question. तो अगर आपकी लीगल नॉलेज में आपको पूछा या दे आस्क्ड यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, तो वहां से they can stem that question and they can turn it into a situation question as well about the political issues. तो जैसे राइट टू लाइफ के बारे में पूछेंगे एंड देन they'll based on your answer they'll ask you a situation based question. तो मुझे अगर आर्टिकल 21 के बारे में पूछा, मैंने आंसर दिया एंड देन they'll ask me कि ओके what is your opinion about freedom of speech in this regard, right to life in this regard, or Omar Khalid's bail being rejected. तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं एंड वहीं से आपके सिचुएशनल क्वेश्चन वो बनाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इंट्रोडक्शन, योर सीवी एंड योर लीगल नॉलेज क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू. इन तीन चीजों से दे स्टेम द सिचुएशनल क्वेश्चन. Okay, so yeah, this is a very important question. It does affect your interview and how they perceive you, because more or less they do expect कि you should know stuff, like इन एंड आउट नहीं भी पता है, हर चीज इन एंड आउट पता होना नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट you it is very important to have a basic knowledge about things when you're preparing for an interview. And if you're like कि मुझे इसका भी आंसर नहीं पता, इसका भी आंसर नहीं पता, तो it does show us negative thing, and it does reflect as a weak point in your interview. Okay, so the most important news किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है. तो इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई थिंक द सेफेस्ट आंसर वुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मैम, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी इम्पोर्टेंट. तुम अपनी लोकल न्यूज बता सकते हो, विच वट एवर स्टेट यूर फ्रॉम. छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ की लोकल न्यूज वहाँ के पीपल लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. अभी बीएमसी के इलेक्शंस हुए, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ मुंबई. एंड अभी हरियाणा में जो सिचुएशन चल रही है, या दिल्ली में जो वो चल रहा है, पूरा AQI बर्बाद हो चुका है वहाँ का, तो दैट्स इम्पोर्टेंट टू द पीपल ऑफ दिल्ली. तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यू कैन मेक द आंसर एंड फ्रेमवर्क फॉलो करके यू कैन गिव द आंसर. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर भी बन सकता है इसमें. गिव द आंसर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस. मैम, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, अभी दिल्ली में AQI इंपॉर्टेंट है, पूरी कंट्री में अभी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सिचुएशन चल रही है वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड पीस इज इम्पोर्टेंट. UN कुछ कर नहीं रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें कैन बी आंसर्ड इस वे में. यस, मूविंग ऑन. HR questions, tell us about yourself. ये जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन और जो बेसिक HR क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं. Why do you want to pursue law? What made you choose Symbiosis Law School? It is very important that you do a research on Symbiosis Law School. When did it start? कौन डायरेक्टर है? मैं अभी एक बता देता हूँ. गुरपुर मैम is the director of Symbiosis Law School, and CJ Ravandle sir is the director of SLS Noida. For people who are giving SLS Noida and SLS Pune का interview, I'm not aware about SLS Nagpur and SLS Hyderabad. Do make sure that you go on their website and you do the research. कब establish हुआ, किसने establish किया, and who's been running the colleges, faculty कौन सी सबसे अच्छी है, and what are the alumni की achievement या कॉलेज की क्या अचीवमेंट रही हैं इन द पास्ट, एंड उनके विजन पढ़ो, गोल्स पढ़ो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द कॉलेज इन एंड आउट, क्योंकि वो कॉलेज के बारे में भी पूछते हैं कि आई रिमेम्बर मेरे जब इंटरव्यूज चल रहे थे तो एक बच्चे से पूछ लिया था कि डायरेक्टर का नाम क्या है, एंड वो नहीं बता पाया. एंड डायरेक्ट कब स्टैब्लिश हुआ कॉलेज, ये सब इफ यू कैन टेल, इट्स वेरी गुड. मुझसे मेरे नोएडा के इंटरव्यू में भी पूछा था कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ
नोएडा। तो ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द कॉलेज। नेक्स्ट, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये आप इस वे में नहीं बताओगे कि मुझे टाइम पास करना पसंद है, या आई एम वेरी प्रोक्रेस्टिनेटिंग, या मेक श्योर दैट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर नॉट सुपरफिशियल, बट दे आर नॉट बोगस, और कुछ भी स्ट्रेंथ और वीकनेस डाल रहे हो कि ओ आई एम वेरी time punctual, or yeah, I do too much. This can be my weakness. I take a lot of tasks up. This can be my weakness. These are either bogus or superficial strengths and weaknesses. Make sure that you know yourself well enough to answer these questions either on spot, or you make a framework for them, right? Where do you see yourself in 5 years? So ये क्वेश्चन मुझसे किसी और इंटरव्यू में कहीं और पूछा गया था, एंड दिस गॉट मी somewhere. So it's important to have a future goal ready. And they asked me, where do you see yourself in 5 years? And I just straight up told them कि मैम, passing, writing the AIB exam and pursuing a law career. So this is the shortest and simple answer, that I can think of. ऐसे ही इट कैन बी फॉर यू, क्या तुम छोटा सा भी आंसर दे सकते हो, बड़ा भी आंसर दे सकते हो. इट जस्ट हैज टू द आंसर हैज टू डू justice, and it has to do with your current goals and current career, कि मुझे लॉ करना है, that's what my answer is based on, right? तो मेरे पास एक फ्रेमवर्क रेडी है कि मुझे ये बोलना है. That's what you have to do with your set of information. This PPT and my CV, I'll send both to ma'am, and ma'am will forward. Go through the PPT, go through the CV. Make sure that you write each and everything down in a document, in a piece of paper, wherever you want to do, and have everything ready, right? क्योंकि जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, राइट, उतना आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, उतना आप उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में बैठा सकते हो. इट्स लाइक अ पीस ऑफ द पजल. जस्ट अ सेकेंड, आदित्य अत्री, यस, आदित्य प्लीज. Yeah, I had a doubt that should the question, should the answer of this question, where do I see myself in 5 years, should it be stagnant and concrete, or can the answer be gray? इट कैन बी ऑल्सो इन द ग्रे एरिया, मैम. जैसे मेरा एक स्टैग्नेंट एंड को था, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी वही हो, राइट? योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन वट एवर वर्क्स फॉर यू, राइट? वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या कर रहे हो? जैसे मैं अपने आप को लॉ करियर परस्यू करते देखता हूँ, मैं अपने आप को लिटिगेशन परस्यू करते देखता हूँ, तो मैं वो बताता हूँ, राइट? तो तुम वो बताओ जो तुम्हें करना है. या अगर तुम्हारा अभी डिसाइडेड नहीं है, तो डोंट से कि मैम डिसाइडेड नहीं है, साउंड्स नेगेटिव, राइट? से कि मैम, आई एम कीन ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड टेकिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, and I see myself doing the same in 5 years. It's just that I want to have taken up a lot of opportunities to decide and settle down in the next 5 years, and go through life with that, and hopefully I have it figured out. ऐसा आंसर बता सकते हो, राइट? तो Yeah. एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड, उसको फ्रेम करने का तरीका हो सकता है. मेक श्योर दैट यू फ्रेम इट इन अ पॉजिटिव लर्निंग वे, ताकि उनको कुछ भी नेगेटिविटी ना झलके, बिकॉज दे डोंट लाइक टू सी नेगेटिविटी इन द इंटरव्यूज. दे हाईली आर थिंग्स दैट आर नेगेटिव आर हाईली प्रोन. तो वो तुरंत पॉइंट आउट हो जाता है इंटरव्यू में, एंड दे रेड फ्लैग इट इमीडिएटली. दिस इज आई सीन खुद से, एंड जितने इंटरव्यूज या मैंने बात की है जितने टीचर्स से कॉलेज में भी, आफ्टर रीचिंग कॉलेज, एंड पीपल हु डू टेक द इंटरव्यूज, सम ऑफ द फैकल्टीज डू टेक इंटरव्यूज, तो दे डू से दिस की नेगेटिविटी है वो प्रोन है. वो आपके सीवी में भी दिख जाएगी अगर है, या आपने कुछ बोगस लिखा है, सुपरफिशियल लिखा है, वो तुरंत दिख जाएगा. या इंटरव्यू में भी आप अगर कुछ नेगेटिव बात कर रहे हो, if you're presenting yourself in a way that is not seen in a good way, तो वो तुरंत दिख जाएगा. तो whatever you say, present in a learning opportunity की तरह, या positive way, right? Anything else? Also, is it of any help of doing any course or a legal research paper right now for to add in the CV?
कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू अ लीगल कोर्स कर सकते हो, या इफ यू वांट टू राइट अ पेपर, जैसे मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, तो दैट आई एडेड इन माय सीवी, एंड वो पूछते हैं कि ओके यू राइट ब्लॉग्स अबाउट दिस, जैसे मैंने बोला तुम्हारे सीवी से वो क्वेश्चन निकल सकता है, राइट? तो they might ask you, oh, what did you write in this legal research? What did it teach you? तुमने research की, how did you do the research? And that can stem into a good interview. वहां से आपका 5 मिनट का इंटरव्यू स्टेम होके 10-15 मिनट हो सकता है, राइट? एंड दे डू रिमेम्बर पीपल लाइक दीज, कि ओके इसने लीगल रिसर्च करी थी, इसने इसके बारे में अच्छे से बात की, ही नोज हिज स्टफ, एंड वो that gave you a edge कि okay I remember this guy, this guy is worth taking into our college. गौतम, इफ यू जस्ट टू इंटरप्ट, फिर बेबी लास्ट ईयर आयुष ने वो पेट वाला जो एग्जाम्पल कोट किया था, हाँ और उसका हाँ, पूरे इंटरव्यूज उसके अराउंड ही फिर रिवॉल्व हो गए थे। यस। तो हाँ, बट उसका इट टर्न आउट टू बी थोड़ा नेगेटिव, बट हाँ। इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव मैम। लाइक इफ यू डू राइट स्टफ, so it depends on the interviewee as well. If you do want to do the legal paper or any course, you can go ahead with that, अच्छा रहेगा, like CV में ऐड करने के लिए अच्छा रहेगा, but make sure you have everything ready in regards to that. मैम जिसका एग्जांपल दे रही हैं उसका ये हुआ था कि they asked him about this animal rescue thing, and he still does animal rescue near his house. So they asked him a lot about animal laws, a lot about uh, कैसे आप उसको प्रोसेस, किस तरीका का प्रोसेस होता है, एंड दे स्टेम दैट क्वेश्चन टू अ होल 10 मिनट्स की व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस एंड इट टर्न अ बिट अगली, आई डोंट वांट टू से इट बट इट टर्न अ बिट अगली, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन। ठीक है, तो मेकिंग श्योर यू डोंट गेट इनटू द सेम सिचुएशन, मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग रेडी। तुम कुछ भी अगर सोशल वो कर रहे हो, जैसे एक बच्चे ने भी किया था, आई यूज्ड टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, so make sure you know the laws related to it. Make sure you know the situations that are going on throughout your area, and जो तुमने किया वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? उससे रिलेटेड चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि when it comes to it, when they do ask you, you are able to give them a good answer, right? I hope that clears your question. Yeah, so basically, if I do a legal research on any topic, I must know its background and all the things related to it. या इट्स बेटर टू नो एवरीथिंग, क्योंकि वो पूछेंगे अगर तुमने कुछ लिखा है, मैंने लीगल कोर्स किया है, या मैंने अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को पढ़ाया है, तो वो पूछेंगे, क्योंकि दैट स्टेम्स आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ योर सीवी कि ये एक अलग चीज क्या चीज है, तो वो पूछेंगे उस बारे में। इट्स बेटर टू नो एवरीथिंग। Okay, thank you. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, चैट में कुछ क्वेश्चन। मैंने पहले नोएडा का दिया था, एंड फिर मैंने पुणे का दिया था, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर टाइम फ्रेम इज, तुम कब फ्री हो। मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दिया था, मैं जिस दिन फ्री था, मेरे नोएडा का पीआई लेटर पहले आ गया था, एंड देन पुणे का बाद में आया, फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। तो मैंने नोएडा का स्लॉट पहले भर दिया, एंड देन पुणे का भरा। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हेन यूर फ्री, जब फ्री हो उसके हिसाब से दो। इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस, एज सच कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले पुणे का देना चाहिए फिर नोएडा का देना चाहिए, या पहले नोएडा का देना चाहिए फिर पुणे का देना चाहिए। हाँ, डू रिमेम्बर कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, आप अपना सेकेंडरी ऑप्शन पहले रख सकते हो। तो जैसे आपने हैदराबाद भी भरा है या नोएडा भी भरा है, तो हैदराबाद नोएडा दे के फिर पुणे दो, ऐसे कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू ट्राई कि कैसा होता है इंटरव्यू, एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो उस हिसाब से नोएडा पुणे या नोएडा हैदराबाद पहले भर सकते हो। आई थिंक ये मैं सेकेंड सेशन में बताऊंगा, इफ यू कैन शेयर हाउ टू प्रेजेंट द वीकनेस, बिकॉज आप एक बार उसको खुद लिख लीजिए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, एंड हाउ आई वांट टू शो माय वीकनेस। उसके बाद आई विल बी able to tell you how to present this in a good way, या how to frame it in a good way, कि it doesn't sound too bogus or negative. I hope that Also, answers your question. Yes.
would you suggest using AI for some of this and then humanizing that stuff for a bit of understanding of how to answer? हाँ, why not? I mean, that's the reason AI is there, right? Helping के लिए. But don't rely on it too much. Make sure that what you're writing on your CV is human and it has your touch. क्योंकि वो एज आई सेड पकड़ लेते हैं एनीथिंग यू डू इज लाइक इज गोज थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस तो आपके सारे जो सीवी होता है वो चेक करते हैं जितने आपने सर्टिफिकेट्स दिए हैं जितने आपने क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं जितने आपने अवार्ड्स मेंशन किए हैं दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स द ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट यू राइट ऑन योर सीवी इन द स्टार्ट वो भी वो चेक करते हैं कि कितना अच्छे से लिखा है क्या लैंग्वेज यूज की है they check everything. Yes, they ask you to share the same CV everywhere. पुणे नोएडा का फॉर्मेट सेम होता है आई थिंक नागपुर का भी सेम ही होता है तो यू कैन जस्ट राइट पुणे नोएडा नागपुर एंड हैदराबाद अगर आपने चारों कैंपस भरे हैं तो पुणे नोएडा भरा है तो पुणे नोएडा बस भर सकते हो आपने कौन से कोर्स भरा है वो स्लैश करके बस वहां पे लिखना है एंड यू कैन शेयर द सेम सीवी एवरीवेयर इट डजंट मैटर यू डोंट हैव टू मेक अ न्यू सीवी ऑल टुगेदर यू डोंट हैव टू राइट डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर इन नोएडा का सीवी एंड पुणे का सीवी क्योंकि दोनों सेम ही होना चाहिए शैल आई मूव ऑन और किसी और कोई क्वेश्चंस व्हाट आर योर हॉबीज तुमको क्या करना पसंद है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ अलॉट मैंने क्रिकेट बहुत खेला है तो मैं वो बताता हूँ या मैं मूवीज बहुत देखता हूँ तो मैं वो बताता हूँ तो दीज ऑल थिंग्स दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग क्योंकि दे वांट टू नो योर पर्सनालिटी तो मुझसे मुझे पुणे इंटरव्यू में मेरी मूवीज के इंटरेस्ट के बारे में भी पूछा गया था सीवी का फॉर्मेट कॉलेज प्रोवाइड करता है जब तुम्हारा पीआई लेटर आएगा पर्सनल इंटरव्यू लेटर आएगा उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं उसमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी रहता है जिस साइट से तुम स्लॉट बुक करोगे वो उसमें रहेगी वहीं से आपको फॉर्मेट मिलता है एंड दे गिव यू एवरी वेबसाइट विच यू नीड टू रेफर टू for the format, for uploading your documents, for getting the documents that you require to fill, वो सारे फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं आई शेयर यू द सीवी जो मैंने अभी दिखाया वही फॉर्मेट वो आपको देते हैं इट्स जस्ट ब्लैंक दैट्स इट ओके टेल अस मोर अबाउट योर सिटी तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उस पे वो आता है जैसे रायपुर के बारे में दे आस्क कि ओके व्हाट्स स्पेशल अबाउट रायपुर या इफ यू बिलोंग टू सम एल सिटी आप कोरबा से आते हैं या बिलासपुर से आते हैं या भिलाई से आते हैं तो आप अपनी सिटी के बारे में बता सकते हैं नो योर सिटी इन एंड आउट कौन वहाँ का हिस्टोरिकली कौन इम्पोर्टेंट रहा है जैसे यहाँ पे अजीत जो भी इम्पोर्टेंट रहे हैं ही बिकेम द फर्स्ट सीएम so all this stuff is very important to know about your city where you belong. जैसे मैंने लीगल नॉलेज के बारे में बताया कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सिग्निफिकेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ ये सारी छोटी छोटी चीजें लीगल नॉलेज बेसिक जो होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस राइट सेकेंड करंट अफेयर एंड लीगल इश्यूज की ये जो क्वेश्चन मेंशन्ड है ये सारे इन सब के आंसर्स आर गोना कम आउट ऑफ योर सराउंडिंग्स मुझे कितना अवेयरनेस है न्यूज़ के बारे में मैं कितना अपने आप को अवेयर रखता हूँ राइट दैट्स व्हाट योर आंसर इज गोना कैरी योर अवेयरनेस योर सराउंडिंग की नॉलेज राइट एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज अगेन आई सेड आपका ओपिनियन इंफॉर्मेशन से ही बन सकता है राइट आप जितना अपने आप को अवेयर रखेंगे सिचुएशंस के बारे में उतना आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रिफ्लेक्ट होगा उतना एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ओपिनियन वो होगा तो जितना आप अपने आप को अवेयर रखेंगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा ड्रेस फॉर्मली आपको शर्ट पहननी है यू हैव टू वेयर अ टाई एंड यू हैव टू वेयर अ ब्लेजर in both the interviews or all four of the interviews depends on what campus you've opted for research
and align your answers with the values of Symbiosis Law School. जैसा मैंने बोला, विजन पढ़ो, मिशन पढ़ो, क्या हिस्ट्री रही है, कब स्टार्ट हुआ, क्या एलुमनाई बेस है, एंड रिमेंबर दिस, Symbiosis Law School was established in 1977. It was established way before any NLU was established in the country, right? The only law colleges older than Symbiosis Law School, in my knowledge, are Government Law College Mumbai and GLS Gujarat. That those are the two oldest law colleges, right? उसके बाद Symbiosis आता है. Symbiosis started way before Nalsar and NLS. Nalsar was established in 19, I think it was 1990, late 1990s, and NLS started in 1987. तो there's a 10-year gap there also. तो वहां पे भी एक alumni base बड़ा बनता है. And this is a fun fact, but it can help you. देवेंद्र फडणवीस जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनकी वाइफ has done her law from Symbiosis Law School. So these kind of alumni law Symbiosis Law School has, right? आपको पूरी थ्रू एंड थ्रू रिसर्च करनी है सिम्बायोसिस के बारे में, बिकॉज यू आर गिविंग द इंटरव्यू उनको दिखाने के लिए कि ओके, आई नो योर कॉलेज, that's where I belong, and that's why I want to get into this college, right? Stay updated, keep your, like, GK in check, पूरी अच्छे से करंट नॉलेज करके जाना है, and speak clearly, speak properly. I think that's it. What you do need to remember is to have कॉन्फिडेंस. अपने आंसर में कॉन्फिडेंस रखो. वो कॉन्फिडेंस तभी आता है व्हेन यू बिलीव इन योर आंसर्स. अगर आप अपने आंसर्स बिलीव के साथ लिखोगे तो आपके आंसर्स कॉन्फिडेंट लगेंगे कि हाँ, दिस गाय नोज व्हाट ही इज सेइंग, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, राइट? तभी कॉन्फिडेंस आता है. आप चैट जीपीटी से अपने बारे में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं लिखवा सकते, क्योंकि वो बोगस चीजें देता है, राइट? यू कांट आस्क जेमिनाई टू प्रोवाइड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बेस्ड ऑन योर पास्ट इंटरेक्शन, या आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल के उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं निकलवा सकते, क्योंकि दैट्स नॉट गोना बी ट्रू, राइट? आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपनी खुद से लिखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन अपना खुद से लिखना पड़ेगा, अपने बारे में जो आप बोलने वाले हो इंटरव्यू में वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा. हाँ, यू कैन यूज चैट जीपीटी एंड जेमिनाई टू फाइन ट्यून एवरीथिंग हियर एंड देयर, लाइक यहाँ कुछ गैप्स हैं तो उसको फिल कर दिया, या लैंग्वेज अच्छी कर दी, whatever. But it is very important that you write your stuff खुद से, and you know yourself, like, within this process. Okay. Guys, everyone, Gautam, I've shared a CV format with you, if that's okay. Just check. Uh, I think I can send in the group, and we will give you a day's time to work on your CVs. And I think tomorrow evening should be the deadline, because CV बनाना इतना बड़ा काम नहीं है. कल तक CV हाँ बना मैम. के दो, so that we can now start with your mock PIs. हाँ मैम, this looks good. So good. You know? So I think I'll share this format with them. Okay. And हाँ मैम, जस्ट वन थिंग, एकेडमिक अचीवमेंट में स्लैट स्कोर मत डालना, क्योंकि दे ऑलरेडी नो योर स्लैट स्कोर, तो उनको दिखा के कुछ फायदा नहीं है. इफ यू वांट टू डू, तो अपने कॉलेज के, लाइक, मैंने क्या कौन कौन से क्विजेस किए हैं, कौन कौन से ओलंपियाड्स किए हैं, वो डालना बेटर रहेगा. जस्ट दिस वन थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट. सॉरी टू. Also, could you share the PPT after the meeting gets over? हाँ, श्योर. Okay. So I'll share my CV with ma'am, and मैं एक लिस्ट पीआई कॉल लेटर भी शेयर करूंगा अपना, एंड उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेगी. मेक श्योर वो आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे, ताकि when the interview does come around, you're quickly able to fill वो, क्योंकि it's good that you fill, like, earliest डेडलाइन से वो करने में थोड़ा सा उनको भी वो होता है कि okay, there are a lot of things to check and they miss stuff out. So they're not able to make proper good questions based on your CV and your academic achievements, extracurricular activities. It's good that you, like, uh, upload your things, documents पहले. It's better to do that. तो ठीक है. Okay. So I think, okay, I think that is it.
मोर और लेस इतना ही होता है कि इंट्रोडक्शन उसमें कि मैंने क्या करना है, व्हाट डू आई नीड टू डू, व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट एंड व्हाट आई एम करेंटली डूइंग। ये तीन चीजें क्लियर रहनी चाहिए। मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस, दैट आई नो माई सेल्फ वेल इनफ, एंड व्हाट माई करियर गोल्स आर। मेरी करंट नॉलेज कैसी है, व्हाट्स माई ओपिनियन, एंड इफ आई कैन थिंक ऑन माई फीट based on the problem, right? These are the things that they look for, and these are the most important things there are, right? So, uh, as we said, कल तक आपका CV ready होना चाहिए, and if I can, I will try to come to the center to have a look. If not, we'll have another online session or where I'll review the CVs, where I'll point out what mistakes, what changes you need to do, and उसके बाद we'll start the mock PIs. So make sure that you're updated on the current affairs and make sure you're updated on the social issues around the world. Thank you everyone. You can leave the session. थैंक यू भैया, बाय बाय। Bye.